ओम श्री गणेशाय नमः। अथ चतुर्थी कर्म। तत्र पारस्करः चतुर्थ्यामपररात्रे विवाहमारभ्य चतुर्थे अहनीयपररात्रे इत्यर्थः। रेणुः गृहाभ्यन्तरतस्तस्यादपि अङ्गतवान्न मण्डपे स्नात्वैतदाचरेत् कर्मेत्येवं कात्यायनो ब्रवीत। आचमनं प्राणायामः पवित्रधारणम् देशकालौ संकीर्त्य शुभपुण्यतिथौ श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं विवाहाङ्गभूतं चतुर्थी कर्माहं करिष्ये। तत्र गृहाभ्यन्तरतः स्थण्डिले पञ्चभूसंस्कारपूर्वकं वैवाहिकाग्निमुपसमाधाय ततो दक्षिणतो ब्रह्मासनमास्तीर्य तत्र ब्रह्मणोपवेशनम्। दक्षिणतो ब्रह्माणमुपवेश्योत्तरत उदपात्रं प्रतिष्ठाप्य ततः प्रणीता प्रणयनादि स्थाली पाकगुंश्रपयित्वाज्यभागविष्टा भागाविष्टाज्याहुतिर्जुहोति। ॐ अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वानाथ काम उपधावामि जास्यै पतिग्नीतनुस्तामस्यै नाशय स्वाहा। इदमग्नये नमः। ॐ वायो प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथ काम उपधावामि जास्यै प्रजाग्नीतनुस्तामस्यै नाशय स्वाहा। ॐ सूर्यप्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथ काम उपधावामि पशुग्नीतनुस्तामस्यै नाशय स्वाहा। इदं सूर्याय नमः। ॐ चन्द्रप्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथ काम उपधावामि जास्यै पतिग्नी गृहग्नीतनुस्तामस्यै नाशय स्वाहा। इदं चन्द्राय नमः। ॐ गन्धर्वप्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथ काम उपधावामि जास्यै जशोऽग्नीतनुस्तामस्यै नाशय स्वाहा। इदं गन्धर्वाय नमः। ततः स्थालीपाकमभिगार्य स्थालीपाकस्य जुहोति। ॐ प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः। हुत्वैतासाम् आहुतीनाम् उदपात्रे सग्मुसर्वान् समवनयति। ततः स्विष्टकृतादिप्रणीता विमुखान्तं प्रकृतिवतो प्राशनान्ते तत एतां मूर्धन्यभिषिञ्चति। तत इति उदपात्रादुदकं गृहीत्वा पञ्चपल्लवैः अभिषिञ्चति वरः। ॐ जाते पतिघ्नी प्रजाघ्नी पशुघ्नी गृहघ्नी जशोघ्नी निन्दिता तनूर्जारघ्नी तत एनां करोमि साजीर्यत्वं मया सहासौ असावीति द्वितीयान्तं वध्वानाम गृह्णाति अमुकनाम्नीम् इति अथैनाग्मुस्थालीपाकग्मुः प्राशयति। ॐ प्राणैस्ते प्राणान् सन्दधाम्यस्थिभिरस्थीनि माग्मुसैर्माग्मु सानित्वचा त्वचम्। अयं वधू संस्कार एव अतश्चरोरुपघाते अन्यचरोरुत्पादनम् इति।
वधूः शुद्ध्यर्थमाचामेत शिष्टाचारं कुर्यात् यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन संकल्पः भूयसी दानम् आशीर्ग्रहणम्